Good morning to all of you. Good morning. Currently ଆପଣଙ୍କର जो गुरुकुल preliminary mock test conduct ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆମେ ସେ 50 questions ର I mean 50 MCQs ର answer and explanation discuss କରିବା. Before starting the discussion class, just ମତେ ଟିକେ clear कर दियंतु audio and जो PDF ଟା ମୁଁ open କରିକି ରଖିଛି ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ clear ଅଛି କି ନାହିଁ जो माने भी online ଅଛନ୍ତି live chat ରେ କେହି ଜଣେ ବି ମତେ clear କରିଦେଲେ ହବ. I'm giving 1 minute. After 1 minute, we will start the discussion class. ठीक ଅଛି? Okay. Assuming everything is good, per question ମୁଁ ଯେମିତି 10 to 15 seconds to 20 seconds ଯଦି question ଟିକେ difficult ଅଛି ଆଉ ଟିକେ conceptual clarity ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ question read କରିବାକୁ ତ answer କରିବାକୁ live chat ରେ 20 seconds ବି ଦେଇପାରେ but purely factual history question ପାଇଁ କି ମୁଁ 10 seconds ହିଁ ଦେବି and 10 seconds ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ବି online ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ try କରିବେ କି live chat ରେ ଯେମିତି answer ଦେବେ. Okay. First question ଆମେ start କରିବା without wasting any further time. The following statements regarding the partition of Bengal 1905. It was implemented during the tenure of Lord Curzon. It created Eastern Bengal and Assam as a separate province. It was primarily intended to promote industrial development. पचारची केतेटा statement आ भितरु correct अछि. Your 10 seconds starts now. एंड आउ गोटे कथा मु कहि दउची जो जगह रे जो माने बुझी परिबेनी से मते सेही जगह रे एटी लाइव चैट रे जणेबे कि ए पर्टिकुलर ए क्वेश्चन रो ए जिंसटा बुझी हेलानी. ओके तो आमे सेमती साइमल्टेनियसली क्लियर करी करी चलिबा. हिस्ट्री क्वेश्चंस रे एथिरे तो किछि कांसेप्ट सेमती इन्वॉल्व नाही. ओके तो आमे स्टेटमेंट 1 देखिबा प्योर फैक्चुअल अछि काइना जो माने हिस्ट्री रिवाइज करथिबे कि मॉक टेस्ट्स अपीयर करथिबे जानथिबे कि एटा इम्प्लीमेंटेड. This is correct. It was implemented during the tenure of Lord Curzon. Okay. And Lord Curzon was viceroy when Bengal was partitioned in 1905. Se kon thile se setikara Lord Curzon setabale India ra viceroy thile. Then statement 2, it created Eastern Bengal and Assam as a separate province. बेंगल बहुत लार्ज थिला वे टू लार्ज तांको हिसाब रे तो ताकू से माने कोन कले दीटा पार्ट रे डिवाइड कले. फर्स्ट पार्ट रे से माने डिवाइड कले गोटे थिला वेस्टर्न बेंगल रे आ गोटे होची ईस्टर्न बेंगल रे. वेस्टर्न बेंगल रो कैपिटल थिला कलकत्ता एंड एटा गोटे हिंदू मेजॉरिटी पार्टीशन एटा गोटे करथले एठी हिंदू माने मेजॉरिटी थिले. एंड ईस्टर्न बेंगल एंड असम रे कैपिटल थिला ढाका एंड मेजॉरिटी के थिले मेजॉरिटी थिले मुस्लिम्स. ठीक अछि. ब्रिटिश माने एटा कोन पई कले कि से ऑफिशियली एटा रीजन देले कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पई करछंती किंतु रियल रीजन थिला कि से माने हिंदू और मुस्लिम मान को डिवाइड करिया को चाहउतले माने से माने यूनिटी को वीक करिया को चाहउतले. स्टेटमेंट 3 कला प्राइमरीली इंटेंडेड टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. नो एटी मु कहली ना कि तांकर कहिले गोटे कथा बट तांकर रीजन पछरे तार थिला आ गोटे जिंस किंतु एथिरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोनोसी देरी भी आसुनी.
this is actually a trap statement. British never partitioned Bengal for industry. Real aim तांकर political control ही थिला. तो हमारा answer अब 1 and 2. Assertion कही the partition of Bengal led to the rise of the Swadeshi movement. Reason होची partition was perceived as an attempt to divide Indians on communal lines. Just हमें discuss कले easy लगी पाए बेटा को solve करिया को. Assertion correct अछि kind of partition led to Swadeshi movement. British decision people were very angry, so they माने कौन कले से माने protest start कर दिले. Result हैला कि जो स्वदेशी movement it began in 1905. Reason भी correct अछि. Partition seen as communal division. मु कहली हिंदू majority area और मुस्लिम majority area को British माने separate कले, so लोक माने feel कले कि British are dividing us. So आमर आंसर कौन? आंसर अब ए. लिंक आर एटा कि people एटा को divide and rule भाबरे देखिले से माने protest कले स्वदेशी movement start हैला. So reason explains the assertion. Consider the following statements regarding the Swadeshi movement. It promoted indigenous industries. It involved boycott of foreign goods. It was confined only to rural areas. Promoted indigenous industries. Obviously, Swadeshi माने indigenous local बा Indian से माने पिंदिबे buy से माने किणिबे भी Indian goods और support भी Indian industries को करिबे. So for example से माने handloom को support करुतले instead of British cloth. Statement number 2, it involved boycott of the foreign goods. Exactly ये statement को compliment करूची कि boycott करुतले foreign goods को refuse करुतले से माने को use करिबेनी British clothes को जळाई देले. They burned the British clothes, avoided the British goods, so it hit British economy directly. It was confined only to rural areas. नाइ इटा wrong होबा काइना movement mainly कोठी cities रे start हेतिला जेमति कि Bombay and Calcutta. Participate किए करथिले students करथिले middle class करथिले ठीक अछि. later एटा spread हेतिला rural area को. answer अब B 1 and 2. match the following कहिछि list 1 रे किछटा जिंस अछि and list 2 रे त related किछटा जिंस अछि and matching करिवो को कहिछि. लॉर्ड कर्जन अनुशीलन समिति स्वदेशी मूवमेंट 1911. list 2 रे लेखिला annulment of Bengal partition, revolutionary organization, partition of Bengal और boycott of foreign goods. लॉर्ड कर्जन आमे जानिले एटा कोन पार्टीशन ऑफ बेंगल पई की तांकरी टाइम रे हितला एंड सीए रिस्पांसिबल थिले. सो लॉर्ड कर्जन हबो पार्टीशन ऑफ बेंगल 1 रो सी. देन अनुशीलन समिति एटा गोटे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थिला. रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एटा थिला कोन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एटा होची गोटे सीक्रेट ग्रुप थिला जे कि आर्म्ड स्ट्रगल एंड एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व रुतला. फॉर एग्जांपल यूथ मान को एटी ट्रेन करा जाउतिला रेवोल्यूशन पई. एटा कोन बा एटा होची गोटे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बी 2 रो हबो बी. देन स्वदेशी मूवमेंट क्लियर हेची कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स थिला. कोर फीचर ही तार थिला बॉयकॉट. सो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स इट इज डी. तापरे एटार कोन हे जिवो हमर एटार ऑब्वियसली ए हो. 1911 रे कोन हेतला जो पार्टीशन टा हेतला 1905 रे एटा को एनल कर दिया गला. annulment of partition due to protest. ब्रिटिश कौन कले से पार्टीशन को कैंसल कर देले. तो हमारा आंसर अब बी. Consider the following statements regarding the impact of partition of Bengal. It led to the rise of militant nationalism. It resulted in the immediate formation of Muslim League. It strengthened the nationalist consequences.
It led to rise of the militant nationalism. Militant माने कौन? Aggressive nationalism. मन रखिए militant माने ही होची aggressive. ठीक अछि एक्सट्रीमिस्ट माने एक्टिव थिले बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल एटा करेक्ट हो इट रिजल्टेड इन द इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग नहीं इमीडिएटली फॉर्म हैला मुस्लिम लीग एक्चुअली फॉर्म के बेहितला 1906 रे पार्टीशन के बेहितला 1905 रे एटा इमीडिएट रिजल्ट नुहो इथरे मल्टीपल रीजंस इन्वॉल्व अछि इट स्ट्रेंथन द नेशनलिस्ट कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्शियसनेस सॉरी ऑब्वियसली people became more aware से माने तांकर यूनिटी बढ़िला तांकर एंटी ब्रिटिश जो फीलिंग्स थिला सेटा बढ़िला आंसर अब 1 and 3 The British justified the partition of Bengal on administrative grounds. Bengal presidency was considered too large for efficient administration. Very easy question, just first question or second question that I already discussed kari sarche. Assertion correct अछि kind administrated British said कि Bengal बहुत large ही होची manage करिवा को so से माने कौन करिवे ताको divide करिकी डिवाइड कर देले तांगर एडमिनिस्ट्रेशन सहज होई जिवो ताको एडमिनिस्टर करबा सहज होई जिवो एंड से माने एटा रीजन देले कि बेंगल इज टू लार्ज फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड ए हबार आंसर कंसीडर द फॉलो सूरत स्प्लिट ऊपर स्टेटमेंट्स देइची पचारची केतेटा करेक्ट अछि आ भितरु read the statements and answer accordingly it took place in Gujarat correct अछि यार आंसर सूरत गुजरात रे अछि तो एठू आपण जानि पारुथिबे कि एटा कॉमन सेंस लगै कि it obviously took place in Gujarat then split between moderates and extremists yes difference create हला moderates माने से माने कोन कहउतले से माने कहउतले कि हमें peaceful method adopt करबा but extremist माने कहउतले कि aggressive method adopt करिया पई it led to immediate independence of obviously it is not 1947 रे obviously independence came in 1947 our answer amar kon answer aba 1 and 2 consider the following leaders and पचारछि कि आंक भितरु केते जण एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रे एसोसिएटेड थिले बाल गंगाधर Tilak the Thile Kangina Bal Gangadhar Tilak was the most prominent extremist leader. And why extremists ye aggressive nationalism re believe रखुले and तांकर जो famous line Swaraj is my birthright and I shall have it एटा जानिथिबे समस्ते then लाला लाजपत राय भी correct ये भी जने extremist थिले ठीक अछि then extremist रे एटा मन रखिबे कि लाल बाल पाल आहुरी भी थिले किंतु ए तीनोटी ना आपण मने रखिबे कि एमाने दे वर ऑल एक्सट्रीमिस्ट्स गोपाल कृष्ण गोखले नो ही वाज अ मॉडरेट सी बिलीव करथिले कि ब्रिटिश मानक सहित आमकू
डायलॉग करबा दरकार कथावार्ता हवा दरकार ग्रेजुअल रिफॉर्म्स आसीबा दरकार तो मेथड से कौन कहउतले कि हमें पिटिशंस फाइल करिया दरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच हिसाब रे हमें चलीबा दरकार दादा भाई नारोजी भी जने मॉडरेट थिले ही वाज आल्सो अ मॉडरेट से जने अर्ली कांग्रेस लीडर थिले मॉडरेट थिले एंड ही वाज फेमस फॉर हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ठीक अछि आंसर अब 1 and 2 match the following list 1 list 2 देइछि try to match within 10 seconds moderates कोन हबो moderates हबो b से माने कोन करथले constitutional method रे बिलीव करूथले ठीक अछि दे बिलीव इन पीसफुल मेथड दे बिलीव इन डायलॉग विथ ब्रिटिश पिटिशन रेजोल्यूशन ए सब रे बिलीव करथले एंड एक्सट्रीमिस्ट कोन करथले बॉयकट एंड स्वदेशी माने से माने एग्रेसिव नेशनलिज्म रे बिलीव करथले से माने कहथले कि हमें डायरेक्टली एक्शन नबा मास पार्टिसिपेशन दरकार सो बॉयकट स्वदेशी पैसिव रेजिस्टेंस एगुडा तांकर मेथड थिला सूरत सेशन रे हमें जस्ट हमें देखिले कि स्प्लिट हेइतला 1907 रे तो 1907 रे सूरत स्प्लिट जिवो एंड लखनऊ सेशन रे से माने कोन हेले पुनी थरे रीयूनाइटेड हे गले रीयूनियन इन लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट ओके रियूनियन कहा का भीतर हैला रियूनियन दीटा ग्रुप भीतर हैला गोटे होची फर्स्ट द मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भीतर हैला देन कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग आंकर भी रियूनियन हैला सो से हिसाब रे हमर आंसर कोन बा हमर आंसर बा बी The Surat split weakened the national movement temporarily. Reason होची it led to division within the Indian National Congress. Easy कि सूरत स्प्लिट टेम्पररीली वीकन कला नेशनल मूवमेंट को कहना स्प्लिट हे गला कांग्रेस फर्स्ट बिफोर स्प्लिट कांग्रेस यूनाइटेड थिला तापर से कोन हैला स्प्लिट फॉर लीडरशिप डिवाइड हे गला वीक कोऑर्डिनेशन हैला मूवमेंट स्लो डाउन हे गला रीजन होची कि डिवीजन विद इन द कांग्रेस यस मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हैला सेइथरे सूरत स्प्लिट हैला आंसर अब ए Consider the following statements regarding the moderates. Read the statements and answer the correct. पचाची केतरा statement correct अच्छी. They believed in constitutional agitation. Yes, constitutional agitation से believe करूथिले within the law and system सब किछि हबा दरकार violence न हबा दरकार rebellion न हबा दरकार so से कोन कोन मेथड यूज करथिले से petition memorandums and discussions ए भलिया मेथड को से माने यूज करूथिले they supported boycott and passive resistance no they ए मेथड गुडा एक्सट्रीमिस्ट को बिलोंग करे एक्सट्रीमिस्ट माने जो माने थिले से माने को बिलोंग करे मॉडरेट्स बिलीव्ड कि कन्विंस द ब्रिटिश बट एक्सट्रीमिस्ट माने कहउतले कि ब्रिटिश माने को अपोज करबा दरकार अपोज द ब्रिटिश दे प्रिफर्ड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स यस हम ऑलरेडी डिस्कस करछे से माने ग्रेजुअल रिफॉर्म को प्रेफर करूतले दे डिड नॉट वांट इमीडिएट इंडिपेंडेंस से माने चाहुतले कि स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म आसु
and Indian participation ସେଥିରେ slowly increase କରୁ. Answer is 1 and 3. Consider the following statements regarding extremists. They advocated Swaraj, they supported Swadeshi and boycott, they relied only on petition and prayers. Obviously ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପୂର୍ବ discussion ରେ ଆମେ already ଆକୁ discuss କରି ସାରିଲେଣି ଏଇଆ କି ସେମାନେ yes ସ୍ୱରାଜ ମାନେ କଣ self rule or independence ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ ବା self rule ଦରକାର ଥିଲା. They wanted immediate political rights. They supported Swadeshi and boycott. Yes, Swadeshi mane kon Indian goods ro use kara jo and boycott hoji ki reject the British goods. They supported that. They relied only on petition and prayers. Petition and prayer a method guda na moderates manankar thila ame already discuss karche. So eta extremist manako saita linked nuhe. Answer aba C 1 and 2. The partition of Bengal was annulled in 1911, purely factual. Continuous protest and opposition forced the British to reverse the decision. Partition annul କରାଗଲା 1911 ରେ गोटे मैच द फॉलोइंग रे हमें डिस्कस कले एनुअल्ड माने कोन कैंसल 1911 रे कोन हला ब्रिटिशर माने ता पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कले ताकर जो डिसीजन डा थिला एंड आर रीजन होची कि ब्रिटिशर्स माने कंटीन्यूअस प्रोटेस्ट एंड ऑपोजिशन से माने फेस कले स्वदेशी मूवमेंट हला बॉयकॉट पब्लिक प्रोटेस्ट सो पीपल यूनाइटेड अक्रॉस इंडिया सो दिस रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन आवर आंसर अब ए. Consider the following statements regarding the revolutionary organization during the Swadeshi period. Anushilan Samiti was one such organization. Jugantar was another revolutionary group. They relied solely on constitutional methods. These are पचारची कितना statement इतने correct अच्छी. इतने गोटे statement जदि आपण मैं गोटे hint दूची कि गोटे statement जदि eliminate करिवे ना आपण को पछे जणा थाउ कि न थाउ ए विषय रे एटी क्लियरली अछि कि पचारिछि स्वदे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन विषय किंतु गोटे स्टेटमेंट देछि कि दे सोली रिलायड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स बा पीसफुल मेथड्स सो आंसर विद इन 10 seconds. अनुशीलन समिति हमें जानले कि गोटे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थिला गोटे सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि एक्टिव मेनली कोडी थिला बंगाल रे and Jugantar was another revolutionary group. Yes, what was Jugantar? Jugantar eta hochi gote revolutionary newspaper plus organization and it was linked to extremist nationalism, armed resistance, secret planning एगुडा सब तार activities थिला. They relied solely on constitutional methods. No, constitutional method माने competition देबे से माने peaceful method अप्लाई करिवे. रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स माने से माने कोन करदि वायलेंस, सीक्रेट ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन एगुडी को सब तांकर मेथड्स थिला.
हमर आंसर अब 1 and 2 करेक्ट पचारछि ना हां आंसर क्वेश्चन रे देखुथिबे कि करेक्ट कि इनकरेक्ट पचार जदि इनकरेक्ट पचार थांदा ना ताहले हमर आंसर 1 and 2 हेइ न थांदा ताहले सेटा 3 जहा हेले भी ऑप्शन रे थांदा मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड लिस्ट 2 रीड द लिस्ट्स एंड आंसर बाल गंगाधर तिलक एटा हमें जानिले ये जने एक्सट्रीमिस्ट लीडर थिले गोपाल कृष्ण गोखले ये जने मॉडरेट लीडर थिले एंड ही बिलीव्ड इन डायलॉग्स एंड रिफॉर्म्स माने ग्रेजुअल बा पीसफुल रिफॉर्म्स सो हाँ एटा बी गले ये गोटे मॉडरेट लीडर थिले सो अब ए देन बिपिन चंद्रपाल लाल बाल पाल मु कहितली द ट्रायो से कौन थिले बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल रो जो पाल थर्ड पार्ट टा बिपिन चंद्र पाल सो सी देन फिरोज शाह मेहता constitutional politics सहित associated d he believed in lawful and constitutional approach answer हमरो कोन इज आंसर इज हमरो c Consider the following statements regarding the Monetary Policy Committee. It was established under the RBI Act 1934, amended. It consists of 6 members, including both RBI and government nominees. It is responsible for fiscal deficit management. Correct, Pacharji? Ketata achi? So the Monetary Policy Committee was created through amendment to Reserve Bank of India Act 1934. The amended line 2016. Just a second. Correct अछि. It consists of 6 members. तीनिटा तीन जन रुहंती आरबीआई रु आउ तीन जन रुहंती जहाँ को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे. It is responsible for fiscal deficit management. नहीं, fiscal deficit it is handled by government. Okay, and monetary policy it कौन handle करूची? Monetary policy inflation and interest rate handle करे. Answer about 1 and 2. Question number 17. A repo rate is an important tool of monetary policy. Reason whose it determines the rate at which RBI borrows from the commercial banks. रेपो रेट हूँ गोटे इंपोर्टाट टूल कहीं रेपो रेट कौन कंट्रोल करे? रेपो रेट इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल करे. आमर रेपो रेट बढ़िले इन्फ्लेशन कमे. It determines rate at which RBI borrows from commercial banks. Yes, wait a second. No, actually एटा उल्टा कह देले. एटा होची reverse repo rate. Sorry, reverse repo rate, not repo. एटा होची repo rate देला, but आर reason टा एटी reverse repo rate रो देइची. repo rate रे कौन हुए? RBI lends to banks. reverse repo rate रे कौन हुए? सेटार उल्टाटा. RBI borrows from banks. So answer कौन होबा? Answer होबा A is true but R is false. Consider the following statements regarding CRR and SLR. कहले CRR is maintained with RBI in cash form. Yes, बैंक माने कौन करंती तांकर डिपोजिट मनी RBI पाखरे रखंती किछिटा पोर्शन तार in the cash form. सेटा होची cash reserve ratio. SLR maintained by banks in the liquid assets. Yes, banks keep liquid assets जेमति कि cash हला से माने gold रे रखि परिबे and government securities G6.
किंतु सीआरआर होची कैश फॉर्म रे रखिबे बोथ आर यूज्ड टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी एब्सोल्युटली करेक्ट जेतेबेले कि सीआरआर और एसएलआर अधिका जाए ताहले बैंक मानक पाखरे कम पैसा बंचे फॉर लेंडिंग पर्पसेस सो लोअर सीआरआर और एसएलआर होची मोर मनी करेक्ट तो आंसर हबा हमरा डी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 देछि पचे कहिछि मैच करिवाकू रेपो रेट हम सी लेंडिंग रेट ऑफ आरबीआई एथरे कोन बे आरबीआई लोन दिए बैंक मानकू देन रिवर्स रेपो रेट कहली आरबीआई कौन करे बैंक्स मानक ठारू बोरो करे तो एटा हबो लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन बाय आरबीआई देन सीआरआर होची कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व विथ आरबीआई एटा होची गोटे मैंडेटरी रिजर्व जोटा कि बैंक माने किसिटा पोर्शन तांकर डिपोजिट रखिबो को आरबीआई संगरे दे आर मैंडेटरी एसएलआर होची स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसेट केप्ट बाय बैंक्स माने निज पाखरे सेटा रखंती विथ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स जेमती म कहली कैश हिसाब रे हैला कि गोल्ड हैला नले गवर्नमेंट सिक्युरिटीज आंसर हबो एटार डी करेक्ट आंसर इज बी Question number 20. Consider the following statements regarding PSL, priority sector lending. It mandates bank to lend a fixed proportion to priority sectors. Agriculture is a component of PSL. It applies only to private banks. First statement कहला mandates bank to lend a fixed proportion to priority sector. Yes, priority sector lending एथे नारो ही क्लियर होची कि आरबीआई कौन करे it requires bank to lend a fixed percentage of total loans. धरो से माने 100 रुपीस रखी चंदी लोन देबे से माने मार्केट को तो आरबीआई कौन करिवो कि बैंक्स मानको एटा से कहि पारे कि आधरु 60% माने 60 रुपीस एई सेक्टर को जिबा दरकार सो करंट रूल एटा होची अराउंड 40% ऑफ टोटल लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर मान को दिया जाए ठीक अच्छे कौन पाई दिया जाए टू एनश्योर क्रेडिट रिच फार्मर हैला स्मॉल बिजनेस पुअर सेक्शंस जो माने रहिले तांको पाखो को भी क्रेडिट पहुंचू एग्रीकल्चर इज कंपोनेंट ऑफ पीएसएल यस एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जेमती क्रॉप लोन्स हेगला फार्म इक्विपमेंट लोन्स हेगला इट अप्लाइज ओनली टू प्राइवेट बैंक्स नो कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट बैंक्स फॉरेन बैंक्स रो किछटा कंडीशन अछि दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू प्राइवेट बैंक्स answer कौन हम 1 and 2 selective credit control is used to curb the speculative activities reason होची it regulates credit flow to specific sectors selective credit control
it is used to curb the speculative activities. Yes, speculation माने कौन? Speculation माने होची जो risky buying रहिला, stocks हला, hoarding हला. So RBI कौन करे? Loans ए सब activities पाई की restrict कर दिए. ताको कुआ जाए selective credit control. It regulates the credit flows to separate sectors, specific sectors. Yes, RBI ये control करे ना कि कोठी की loan जीवो, where loan go, how much goes. So connection ये है कि by controlling the credit to risky sectors, speculation कौन होची? Speculation ये curb होची by reduce होची. So the R is explaining A. Answer अब A. And एटा मन रखिए selective credit control टा होची गोटे qualitative tool. Consider the following statements regarding Narasimham Committee reforms. Statement 1 कहला कि they recommend reduction in the CRR and SLR. This is correct कहीं ना बहुत जदि CRR और SLR जदि बढ़ाई देबो RBI कि जदि तांकर proportion बढ़िला ताहले बैंक मानक पाखरे बहुत कम फंड बंचिबो lend करिवा पई की. So very high CRR और SLR will lead to the less lending. Reforms कोन करिला कि सेतरे जदि ताकू जदि reduce करा जिवो then it will increase the credit flow. They introduced prudential norms for the NPAs, meaning NPAs equals to bad loans. NPAs को कौन कहा जाए? Bad loans. So banks must identify and report properly. They abolished RBI. No, how is this possible? RBI still exists. This is a central bank of India. Answer number 1 and 2. Match the following. List 1 and list 2. Just a second. Yes. Okay. List 1 and list 2. इंद्रधनुष कौन? इंद्रधनुष होची कोटे गवर्नेंस रिफॉर्म इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. इतरे गवर्नमेंट कौन करे? गवर्नमेंट प्लान टू इंप्रूव द मैनेजमेंट एंड कैपिटल. सो हमर आंसर कौन हो? इंद्रधनुष होची गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन द PSBs. सी AQR होची एसेट क्वालिटी रिव्यू. RBI एथिरे रियल कंडीशन जो बैंक मानकर लोन सच रहिची तार रियल कंडीशन एथिरे मेजर करे. एटा होची गोटे एसेट क्वालिटी रिव्यू. PCA होची प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. RBI कोन करे? बैंक्स माननकु जो वीक बैंक्स माने रहिले तांकु अंडर रेस्ट्रिक्शन से रखे. RBI puts weak banks under restriction. So this is prompt corrective action. Ease होची गोटे बैंकिंग रिफॉर्म एजेंडा. एथिरे रिफॉर्म प्रोग्राम्स थाए फॉर एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी. तो इज कोन हबो? इज होची डी. आंसर हमर कोन हबो? आंसर इज बी. Consider the following statements regarding the financial sector reforms. They aim to improve the efficiency and transparency. They include strengthening of capital adequacy norms. They eliminate all regulatory oversight. पचाची करेक्ट केतरा ई स्टेटमेंट बिद्रु. Financial sector reforms तांकर एम होची कि केमती बेटर बैंकिंग और लेस करप्शन हबो, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी. दे इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. माने बैंक्स माने कोन करिवे? इनफ कैपिटल रखिबे टू अब्सॉर्ब देयर लॉसेस. दे एलिमिनेट ऑल द रेगुलेटरी ओवरसाइट. नो बैंक्स नीड स्ट्रांग रेगुलेशन. जदि रेगुलेटरी ओवरसाइट को रिमूव कर दिया जिवो देन इट विल बिकम डेंजरस. आंसर इज 1 and 2. Digital public infrastructure DPI improves the financial inclusion. Reason was it reduces transaction and KYC costs. This is true. Kind of financial inclusion ये कौन करे? It brings people into the banking system. Reason कहला कि it reduces the transaction and KYC cost. True. कहना DPI रो example कौन? जेमती कि हमर UPI हैला, आधार हैला, जनधन,
एगुड़िक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जांपल्स. सो एटी होउची कोन कॉस्ट कमुची एक्सेस बढ़ुची मोर पीपल यूज बैंकिंग. सो बोथ assertion and reason are true and R explains A. Consider the following statements regarding OMOs, open market operation. ओपन मार्केट ऑपरेशन रे आरबीआई कौन करे गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज को मार्केट रे बाय एंड सेल करे जते बेले आरबीआई गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज किने सेतरे कौन हुए इट इंजेक्ट्स मनी इन द इकोनॉमी एंड सेल कले कौन हुए इट अब्सॉर्ब मनी फ्रॉम द इकोनॉमी ठीक अछि इट अफेक्ट द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी यस ए थ्रू आमे देखिले कि केमिति लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी अफेक्ट होची बाइंग रे लिक्विडिटी बढ़ुची एंड सेलिंग रे लिक्विडिटी कमुची इट इज अ क्वालिटेटिव टूल नो दिस इज अ क्वांटिटेटिव टूल क्वालिटेटिव टूल नुहे ओएमओ इज अ क्वांटिटेटिव टूल काना एथरे इकोनॉमी रो मनी सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट होची तो जो टूल्स रे इकोनॉमी रो मनी सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट होतिबो ताकू कुआ जाय क्वांटिटेटिव टूल्स आंसर इज 1 and 2. Consider the following statements regarding the banking sector reforms in India. Public sector bank consolidation reduce the number of public sector banks. This is correct. Public sector PSB होची public sector banks. Government कौन करुची? Government merged banks. For example, SBI plus associates ହେଲା बहुत गुड़े bank अछंती तो fewer larger banks रे जेतबळे रिफॉर्म्स अणागला ताको मर्ज करागला गोल होची कि स्ट्रॉन्गर बैंक्स और बेटर एफिशिएंसी क्रिएट करबा पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट अनलिमिटेड डिपॉजिट्स no this is wrong कहीं ना पेमेंट बैंक्स हैव लिमिटेड डिपॉजिट लिमिट तांकर अछि आगरु कोन थिला आगरु 1 लाख थिला एबे सेटा बढ़ी की 2 lakhs रखा जाइछि दे कैन नॉट एक्सेप्ट अनलिमिटेड डिपॉजिट्स तो 2 जदी हमें कैंसिल कर देले ताले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन यस टारगेट ग्रुप होचंदी स्मॉल फार्मर्स एमएसएमई पुअर सेक्शंस एम होची कि ब्रिंग अनबैंक्ड पीपल टू द सिस्टम आंसर अब 1 and 3. Assertion AQR was introduced to clean bank balance sheets. Reason it helped identify stressed assets and NPAs.
clean bank balance sheets. Okay, AQR was introduced to clean bank balance sheets. AQR ର full form କଣ? Asset quality review. It is done by RBI to reveal the true condition of the banks. Reason hela to identify the NPAs. NPAs माने कौन? Bad loans. AQR कौन कराए? Force the banks to show the hidden bad loans. Reason is correct अच्छी. So connection कौन? कि identify NPAs, clean the bank balance sheet. Answer about A. Match the following. Read both the list and match accordingly. यूपीआई कौन? यूपीआई होची हमर इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम. रियल टाइम मनी ट्रांसफर हुए एतरे. आधार आधार हमें जानले एटा होची गोटे डिजिटल आइडेंटिटी यूनिक आईडी सिस्टम. ए देन सी एंड ए एठी हमर आंसर आसी होची हमर आंसर बी हबो. बट स्टिल अकाउंट एग्रीगेटर माने कौन? एटा होची गोटे फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग. शेयर्स फाइनेंशियल डाटा सिक्योरली. ओसीईएन एटा होची गोटे क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क. एथिरे कोन हुए? एथिरे जो छोटो मोटो बिजनेसेस गुडा अछि से मानको लोन मिलिबारे हेल्प करे. सो एटा कोन हबो? बी. Consider the following statement regarding the monetary policy stance. Neutral stance कौन? It balances inflation and growth concerns. Yes, it is correct. kind RBI ए दीटा जिंस को बैलेंस करबा को ट्राई करे inflation and growth. Accommodative stance माने हैला कि एथरे RBI कौन करिवो? RBI interest rate को low करि दबो so that money supply can increase. This is accommodative stance. It boosts the liquidity. Tight stance increases the money supply. ना एटा होची उल्टाटा. Tight stance होची opposite. RBI कौन करिवो? Control करिवो को inflation ପାଇଁ कि it reduces the money supply. Excuse me. Consider the following statements regarding the capital adequacy ratio. CAR. It measures bank's capital in relation to its risk weight assets. एटा correct अछि. कार कौन measure करे? बैंक रो capital divided by bank capital divided by risk weight assets. एटा होची तारा ratio. It includes both tier 1 and tier 2 capital. Yes, total capital मान tier 1 plus tier 2. तो it includes both. It is used to calculate the fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट होची गोटे गवर्नमेंट रो काम एटा. कार होची गोटे बैंकिंग कांसेप्ट. सो हमर आंसर अब 1 and 2. 32. Assertion कहला कि हाई कार improves the banking system stability. Reason होची it enables bank to absorb the financial losses. हायर कार माने कोन? आमे एठी देखले रेशियो माने बैंक कैपिटल प्लस रिस्क वेट एसेट. हायर CAR माने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो केते बळे अचीव होतिबो जेते बळे कि बैंक रो कैपिटल अधिका रहउतिबो रिस्क वेट एसेट रो. ताहले गोटे पॉजिटिव आ अधिका नंबर एठी आसीबो जदी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर थारु कम रहउतिबो. सो से हिसाब रे हमर असर्शन कोन अछि? ठीक अछि. रीजन होछि इट एनेबल्स बैंक टू अब्सॉर्ब द फाइनेंशियल लॉसेस. यस, कहना मोर कैपिटल थिले बैंक्स माने से माने लॉसेस को एफिशिएंटली हैंडल करि परिबे. सिस्टम स्टेबल रहइबो. सो रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन. Answer about A. Consider the following statements regarding tier 1 capital and pacharchi correct kon habo. Statement 1 कहला कि it consists of equity and retained earnings. tier 1 होची जो core capital रहिला बैंक रो. सो एटा करेक्ट अछि. इक्विटी और retained earnings एथरे जाय. It absorbs losses without liquidation. Yes, एटा होची tier 1 actually होची एटा होची first line of defense हिसाब रे नेबे. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. जदि टियर 1 अच्छा खासा कैपिटल थिबो ना ताले बैंक्स से माने लिक्विड आई मीन ताकर लॉस को एफिशिएंटली मैनेज करि परिबे विदाउट लिक्विडेशन टेंशन. स्टेटमेंट 3 कहले इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट डेट. नो, एटा इनकरेक्ट अछि. इट बिलोंग्स टू टियर 2. एटा होछि टियर 2 कैपिटल. आंसर कोन बा? आंसर अब 1 and 2. मैच द फॉलोइंग.
आमे जानले टियर 1 टा होची कोन कोर कैपिटल माने सी हबो टियर 2 कैपिटल होची सप्लीमेंटरी कैपिटल माने एटा कोन गोटे बैकअप कैपिटल सो आंसर इज ए रिस्क वेट एसेट्स आमे देखिले एटा होची एसेट्स जोटा को रिस्क सहित एडजस्ट करिकी रखा जाय ताको कोनती रिस्क वेट एसेट्स कार कार होची बैंक रो स्ट्रेंथ माने एटा स्टेबिलिटी को मेजर करे एटा होची measure of the bank strength so answer will be answer of B. Consider the following statements regarding the Basel worm norms. It focuses primarily on the credit risk. Yes, एमाने Basel 1 से माने merely deal करंती की loan default risk आ ऊपरे. It prescribed a minimum CAR of 8%. Yes, this is minimum requirement. Factual achi, correct achi. It introduced 3 pillars of regulation. Incorrect. This came in Basel 2, not Basel 1 norms. Answer is 1 and 2, option number C. Basel 2 introduced a 3 pillar framework. Just हमें discuss करचे. Basel 2 introduced कौन? 3टा pillar से कौन कौन थिला? Capital adequacy, then capital adequacy ratio, then ଆମର supervision and ଆଉ ଗୋଟେ कौन थिला? Market discipline. Reason होची कि to improve the risk sensitivity and transparency. So ए जो तीनटा पिलर थिले से माने better risk management करिबारे help करथिले and more transparency भी आणथिले. So answer अब हमर A. Consider the following statements regarding the Basel-III. Statement 1 कहिछि it was introduced after the global financial crisis of 2008. Yes, this is correct. काना 2008 global financial crisis जेतले expose ହେଲା banks मानकर weakness, poor risk management ता सहित expose ହେଲା. So Basel 3 was introduced to strengthen the banks. It includes liquidity standards like the LCR and NSFR. LCR ର full form कोन? एटा होछि गोटे एटा मने रखिबे कि एटा गोटे short term liquidity एटा and NSFR होची long term. ठीक अछि. Basel 3 added the liquidity rules. It reduced the regulatory requirements on the banks. नहीं एटा तो उल्टा ही कला. It increased the regulations, made banking stricter. Answer is 1 and 2. List 1 and list 2. List 2 रे Basel 1 रे हमें देखिले. Already हमें discuss कर सारछे एटा credit risk focus. एटा कोन बा? C. क्रेडिट रिस्क फ्रेमवर्क देन बेजल 2 रे कोन थिला तीनटा पिलर से प्रोवाइड करथिला 3 पिलर फ्रेमवर्क देन बेजल 3 होची लिक्विडिटी प्लस बफर्स ओके देन बीसीबीएस एटा हबो हमर ए एटा होची गोटे ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी सो आंसर इज बी. Consider the following statements regarding CAR in India. RBI mandates a higher CAR than global Basel norms. माने बेजल रो मिनिमम केते 8%. इंडिया रे केते
RBI 9%. It is stricter. Minimum car in India is 9%. Yes, I made it discuss kale. India follows Basel-III norms. Yes, eta be correct achi. All of them. Risk-weighted assets are used instead of total assets in car regulation. Yes, this is true. Different assets carry different level of risk. Eta be true achi. For example, government bond ro kono low risk thai, personal loan ro kono high risk thai. So weight is assigned. So reason explains A. Consider the following statement regarding the CET1 capital. It is part of the tier 1 capital. Correct achi. It represents the highest quality capital. Correct achi. It includes equity and reserves. It includes the subordinate debt. This is incorrect because it is tier 2. That is tier 2. So amara kona ba answer? Answer aba 1 and 2. Consider the following statements regarding the BCBS. Wait a second. BCBS hoji kona? Basel Committee on Banking Supervision. It sets global banking standard. Correct achi. Part of IMF. Eta no BCBS is under the kaha under re ase eta BIS under re. BIS kona? Bank for International Settlements. BIS. It is not a part of IMF. It formulated Basel norms. Yes, correct. Answer is 1 and 3. Option number A. Assertion kaila Basel-III introduced capital conservation buffers. Already discussed capital conservation buffer introduced heitila Basel-III under re. So reason hochi these buffers help banking during the periods of the financial crisis. Yes, they help absorb the shocks. So this is true. Assertion and reason are true and R explains A. LCR ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ short term liquidity. Then NSFR eta kono long term funding. Then leverage ratio eta ଗୋଟେ non risk based capital ratio. So eta aba D. Then car hochi ame discuss करचे eta hochi B. bank ro strength एतरे measure करा जाए. Okay, answer कोन aba? Answer aba A. Consider the following statements regarding the importance of Basel norms. They enhance the financial stability, obvious. They reduce the systemic risk. This is also correct. They eliminate all the banking failures. No. They can reduce the risk, किंतु सेमाने सबु जाको banking failure को eliminate करि परिबे नाही. बाल विवाह Mukti campaign. It is a centrally sponsored scheme aimed at eliminating the child marriage. Yes, एटा करेक्ट अछि. फोकस होछि कि एलिमिनेट केमति करा जो चाइल्ड मैरिज को. एठी नारो ही जानि परथिबे कैंपेन रो बाल विवाह माने चाइल्ड मैरिज. ग्रासरूट पार्टिसिपेशन एथरे इन्वॉल्व रखा जाउछि थ्रू अंगनवाड़ी वर्कर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. करेक्ट अच्छी. एसएचजी माने भी इन्वॉल्व अछंती एथरे. ओनली लीगल इट फोकसेस ओनली ऑन लीगल एनफोर्समेंट विदाउट कम्युनिटी अवेयरनेस. एटा केमिति हबो? एटा जदी करेक्ट हबो ताले 2 टा हमर इनकरेक्ट हे जिवो ना. एटी कहिला कि समस्त पार्टिसिपेट करूछंती थ्रू ग्रासरूट पार्टिसिपेशन रहउछि. सो हाउ इज इट पॉसिबल कि आर ओनली लीगल एनफोर्समेंट होछि विदाउट एनी कम्युनिटी अवेयरनेस? सो दिस इज रॉन्ग. आंसर हबो हमर 1 and 2. Consider the following factors contributing to left-wing extremism in Malkangiri. Dense forest cover and difficult terrain. Yes, setre तांको लुचिवा को सुविधा हुए. Helps hiding. High level of industrialization. Area ta underdeveloped achi. So this is incorrect. Proximity to Maoist affected neighboring states. Yes, this is correct. And socio-economic backwardness. This is also correct. Answer number 1, 3 and 4. Option number B. Assertion they increase the black buck population in Ganjam reflect improved ecological condition. जेतबले कोनोसी species रा population increase हुए एटा obvious कि तार ecological condition सेटिकार healthy अछि वा improve हेछि. Reason होछि black bucks are apex predators in grassland ecosystem. Increase in ecological condition, this is true मु कहिली. So reason होछि कि से माने होछन्ती कोन apex predators नाही. Black buck it is false. They are actually herbivores, not predators. So eta kon habo? Answer C habo. A is true but R is false.
Agni 3 missile, it is an intercontinental ballistic missile. Incorrect. Agni 3 होउची गोटे intermediate range missile. Intermediate range missile. It has range of about 3000 to 3500 km. This is correct. It forms a part of India's nuclear deterrence. Eta bhi correct achi. Ketara statement ethru correct achi pacharla. So 2 and 3 clearly is the answer. Last question. Consider the following statements regarding mass drug administration. It targets only infected individuals. No. एंटायर पॉपुलेशन को टार्गेट करा जाए गोटे रिस्क एरियाज रे चाहे सेठी इंडिविजुअल्स अफेक्ट हुवंतु कि न हुवंतु. सो आमर दीटा स्टेटमेंट एटी कटि गला. इट इज यूज्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. yes, this is correct. It includes drugs like diethyl carbamazine and albendazole. yes, ए दीटा ड्रग मने रखी देबे. ए दीटा ड्रग्स एथरे इंक्लूड करा जाए. So this is our last question. 50th question हमें कवर कर से. I hope समस्त टेस्ट दोथिबे. जो माने दो नांती I will advise कि से माने टेस्ट दियंतु. and एटी मु जहा कहिली ताको आउथरे आपण आज रिवाइज करिवे. next week हमें next paper discuss करिबा another 50 questions. So thank you for watching.